Hello students, so in this video we will talk about representation of vectors in space or more about position vectors. This is a subtopic of the chapter vector. तो जैसे कि हमें पता है vector is a quantity that do have magnitude as well as direction. उसके बाद हमें ये भी पता है कि what are the types of vector. But we do not know how to represent a vector or how to write a vector when you do know about the coordinate system. तो हम लोग सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल लर्न कि कैसे हम एक वेक्टर को दिखा सकते हैं. फॉर दैट सबसे पहले मैं सिंपली ले लेती हूँ, मेरे पास एक 2D कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ आपका जो पॉइंट है P पॉइंट इज समवेयर हियर. तो इस P पॉइंट का जो पोजीशन है, लेट अस से द कोऑर्डिनेट्स आर x1 एंड y1. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आप इसको एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हो तो दिस मच लेंथ इज x1 एंड दिस मच लेंथ इज y1. देन आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आपका पोजीशन वेक्टर होगा, अगर ये आपका ओरिजिन है तो ओरिजिन से P पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ जो वेक्टर है वही है आपका पोजीशन वेक्टर. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट R? Let us say it makes an angle theta here. So x1 क्या होगा? x1 will be r of cos theta. This is resolution of r vector along x-axis. Similarly, what will be the resolution of r vector along y-axis? That will be y1. तो उसका वैल्यू होगा r sin theta. तो r वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? r वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं कि this is nothing but x1 vector over I cap plus y1 vector over j cap. एंड अगर हम लोग उसकी बात करें कि इसकी जो एंगल हो रहा है वो एंगल कितने डिफाइन कर रहे हैं, तो वी कैन राइट दैट इज इफ दिस इज tan थीटा देन tan थीटा इज इक्वल टू y1 बाय x1. ये हमें कहाँ से पता चला? सिंपल अलजेब्रिकल फॉर्मूला. दिस इज माय x1, अगर ये वाला साइड y1 है तो ऑब्वियसली ये साइड भी y1 होगा. सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन tan थीटा इज इक्वल टू y1 बाय x1. नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग? Magnitude of this thing is x1 square plus y1 square. अगर मुझे इसको प्रूफ करना पड़े हम लोग कैसे करेंगे? What is x1 square? x1 square is r cos theta whole square. What is y1 square? y1 square is r sin theta whole square. So हम लोग यहाँ पे जस्ट प्रूफ करके देख रहे हैं कि यही आता है या नहीं. तो x1 square plus y1 square हमें क्या देगा? It will give r cos theta square plus r sin theta square. Let us go to the next line. So this will be r square cos square theta plus r square sin square theta. तो r square अगर हम कॉमन ले लेते हैं, so this is cos square theta plus sin square theta. So this will be r square only. तो हमें दिख रहा है कि अगर हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हमारा पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट x इंटू आई कैप इन जनरल प्लस y इंटू जे कैप. और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. एंड जो एंगल वो इंक्लिनेशन है विद द x एक्सिस दैट कैन बी डिफाइंड एज tan इनवर्स y बाय x. नाउ अगर हम लोग एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की बात करें तो इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट अस टेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस. दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय z एक्सिस एंड P पॉइंट समवेयर हियर इज हियर. सो दिस इज x1 y1 z1. तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर ये मेरा ओरिजिन है तो ओरिजिन से P पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ जो वेक्टर है वही है मेरा पोजीशन वेक्टर. लेट इट मार्क्ड एज r. तो हाउ टू डिफाइन r वेक्टर? इट्स सेम. सो x1 i cap, y1 j cap
plus j1 k cap, whereas I is equal to unit vector along x-axis. J cap क्या है? J cap is unit vector along y-axis. And what is k cap? K cap is unit vector along z-axis. So what is R magnitude? R magnitude is nothing but x1 square plus y1 square plus z1 square. So this is the main formula of representing any vector in Cartesian coordinate system. एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सर्टेन ऑब्जेक्ट ए, जिसकी पोजीशन वेक्टर दिया गया है 3, 4, 5, और एक दूसरा वेक्टर है बी जिसकी पोजीशन वेक्टर दिया गया है -1, -2, -3. तो what will be RA and what will be RB? तो RA मतलब position vector of A point. So that will be 3 into I cap plus 4 into J cap plus 5 into K cap. And RB vector is equals to -1 into I cap plus -2 into J cap plus -3 into K cap. So in total, we can write it like this: I cap plus 2J cap plus 3K cap with a negative sign outside. So this is everything you need to know about representation of a vector.